Hello, good morning. As I'm audible. Good morning, Arshit. Audible, na? Audible, na? Thank you. So, okay, let's start. ठीक है, okay, done. आगे start करते हैं. So basically today we'll discuss first decision tree. So let's talk about decision tree. Okay, let me first you know let me write here strategy. See what we are going to do. We will complete today, the syllabus part. Maybe not today, maybe tomorrow we'll complete the syllabus. Okay, because we left out very less syllabus. So tomorrow we'll complete that. After that, see on Thursday, I will give you assignments, not assignments like different assignments. Okay, you have to submit those assignments. Okay, on Friday we will do a doubt class. So if anyone have doubt, you can join the class. If don't have, you don't need to join. But if you have doubt, you can join the class. Okay. Otherwise, you can enjoy your Friday. Got it? Clear? Sorry? Thursday. Today Tuesday, not like tomorrow I will complete the syllabus. Sorry? No, on Thursday itself. On Thursday, Atul. Okay. So maybe till evening, maybe till night, you can submit, no problem. But on Thursday. Okay, Atul? Clear? And Friday we have a doubt class. Suppose you have any doubt anywhere, you can join. If you don't have doubt, you can avoid that, no problem. So this totally depends on you. It's not a mandatory. You can join if you find, yeah, I have some doubt. So please join. I will you can give any doubt, like any doubt. I will try to explain you. Okay. And we will start early, maybe 9 a.m. we will start on Friday. Okay. So if you have any doubt anywhere, we can try to discuss those doubts. Got it? Clear? ठीक है. स्ट्रेटजी में किसी को दिक्कत परेशानी, एनीवन एनी डाउट? क्लियर ना? तो असाइनमेंट के लिए क्लियर रहे. असाइनमेंट्स के लिए देखो, आप ऐसा क्वेश्चंस में, मतलब आई एम जस्ट क्रिएटिंग, सो आई यू नॉट एबल टू फाइंड गूगल एंड ऑल, सो प्लीज डू रिवाइज. आप एक बार रिवाइज कर लीजिए जो आपने पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन विल बी फ्रॉम लाइक अपने क्लासरूम से ही होगी, बट ओवरफिट वाला प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप सीधे ओवरफिट हो जाए. थोड़ा सा तो वो रहेगा ही, मतलब कि आपको मतलब स्ट्रगल करना पड़े, ऐसा तो रहेगा ही. लेकिन हाँ, यू आर नॉट एबल टू फाइंड ऑन गूगल एंड ऑल. ओके, सो बिकॉज आई विल मेक दोज क्वेश्चंस. अभी मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना, सो यू आर नॉट एबल टू फाइंड ऑन गूगल एंड ऑल. या आप कुछ पा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप नहीं पा पाओगे. सो प्लीज डू रिवाइज एंड ऑल. ओके, एंड प्लीज वन थिंग ऑल्सो, डोंट कॉपी अदर आंसर्स ना. लाइक समटाइम्स अगर 4 स्टूडेंट है, एक्स वाई जेड एंड पी, सो सपोज पी का सही है तो दैट आंसर तीनों का सही है. प्रोसेस इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, इवन वर्ड्स आर सेम. देखो, जैसे पहले होता था ना कॉपी करना, तो वो पेन से लिखना होता था, सो एटलीस्ट कुछ तो चेंज होता था. यहाँ तो सीधे कॉपी पेस्ट जाता है ना. प्लीज डोंट डू दैट, बट बिकॉज मैं उसको फिगर आउट कर लेता हूँ, आइडिया जाता है कि कॉपी हुआ है. ठीक है, डोंट डू दैट, अदरवाइज एवरीथिंग विल फाइन. ओके, so let's go and talk about the decision tree.
So one question here, if like जो भी anyone जो आपके friends है they are not attending the class maybe due to some reason we don't know, please inform them कि join करे Thursday को, Thursday 9:30 पे आई विल शेयर द लिंक, प्लीज ज्वाइन एट 9:30 क्योंकि आपके पास फिर पर्याप्त टाइम हो करने के लिए, तो 9:30 पे आई विल शेयर द लिंक, ओके। सो प्लीज इन्फॉर्म, या प्लीज आंसर यू आर एबल टू डू विथ वेरी लाइक कंफर्टेबल में कर लोगे, डोंट यू वरी ना, ऐसा नहीं होगा कि तुम कर नहीं सकते, यू ऑलरेडी गॉन थ्रू द क्लासेज एंड ऑल्सो यू आर एबल टू दिस, डोंट यू वरी, ओके। ऐसा कुछ मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा कि आप समझ ही ना पाओ क्वेश्चन, यू आर एबल टू डू दिस, डोंट यू वरी। बट एट आई एम सेइंग कि गूगल नहीं कर सकते आप कि यार इसका वो आंसर ढूंढ लेता हूं, या फिर आप ये नहीं कर सकते कि मतलब कॉपी तो कर ही सकते हो आपस में, ये तो चैलेंज है एक ऑनलाइन का कि वो तो कोई नहीं रोक सकता ना, वो तो कर ही सकते हो आप लोग, बट गूगल नहीं कर सकते, इसलिए ये मैं कह रहा था, बाकी यू आर एबल टू डू। Meghna, all topic starting from Python to till Wednesday. हाँ, yes, every topic Meghna, like from first class to till tomorrow. So everything will be there. Okay. Not the same question. I will going to take pattern. Maybe yeah. Sudhir maybe will do the same. Yes. Okay. But yeah, you like avoid to copy other answer. Other ये करना बस. You can try your own and you will able to, because देखो right now जो भी class में है ना, all of you are already attending all the class जो भी है, क्योंकि just मैं यही देख रहा था. So देखो लास्ट में विघ्नेश्वर से लेकर के स्टार्टिंग में अगर आ जाए तो अभिषेक गुप्ता, सो यू ऑलरेडी अटेंडिंग ऑल द क्लास है ना, ऑल ऑफ यू, आई डोंट बिलीव, सो यू गाइज आर एबल टू डू दिस वेरी इजीली, क्योंकि देखो जो भी लोग दिख रहे हैं ऑलमोस्ट सबका मुझे नाम भी याद हो चुका है, ऑलमोस्ट सचिन, ऑलमोस्ट एक दो लोग का छोड़ दे तो सबका याद है मेरे को नाम, श्रेया, मनीष, हाँ ऑलमोस्ट जो भी अभी हैं इनका नाम भी मुझे याद हो गया. सो व्हाट आई एम सेइंग कि यू गाइज आर एबल टू डू दिस, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइज, ओके, यू कैन इजीली डू दोस क्वेश्चंस, ओके. So let's go ahead, let's talk about decision tree right now. I think Lakshmi are not there, no? She's also attending the class, but tomorrow's yesterday she is not there. I think today also she is not there. Vigneshwar, she is not okay. I think she is from your college, no? Vigneshwara. Just inform her, na, कि like Thursday test. Vigneshwar, I'm audible too, na? Okay, Vigneshwar, thank you. But please inform her about that, na? Yeah, thank you. So let's go ahead, guys. Let's talk about the decision tree. See, decision tree is very simple actually. You know, very simple, very statistic, very normal model, but very important to show your client whenever, like, see, maybe you are going to use any model on your data, but whenever you want to like show PPT to your client, always we use decision tree, because easily anyone can understand what is happening. It's so simple, okay. Yeah, the process is very complex, but if you want to show the decision tree, you come to know, okay, this is happening, I am able to make the model. Yeah, but process is little complex. Let me show you. See, suppose here is a tree. Rain, no. So then I will go Delhi. Simple. Rain, yes. Okay. Then maybe I can ask two things. Maybe slow rain, yeah, maybe heavy rain. So if yes, I will know, I will not go Delhi. If rain is slow, I will go Delhi. So this is just like a tree. I build a tree where I am taking decision where I will go Delhi or not. So if there is no rain, yes, I will go Delhi. But suppose rain, yes, and then heavy rain, then
I will not go Delhi. If rain is slow, I will go Delhi. So it looks very simple tree. I just make a tree and then I take the decision whether I will go Delhi or not. Very simple actually. Even see, let me show you another example. See, let me maybe index is positive, and then I check maybe Nifty bank is also positive. If it is yes, if it is no, index is positive no, then I'm checking Nifty bank and Nifty 50. Nifty 50. So if Nifty bank is positive and this yes, I will buy the share. BUI, buy the share. If Nifty index is negative and Nifty bank is also negative, I will not buy the share, any share, like, because Nifty is very market को एक फुल डायरेक्शन देता है कि क्या हो रहा है मार्केट में. सो आई एम जस्ट टेकिंग द निफ्टी की निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी बैंक का क्या परफॉर्मेंस है, निफ्टी 50 का क्या परफॉर्मेंस है, एंड देन आई विल टेक द डिसीजन. सो दिस इज द tree, and using this tree I can take fatafat decision like this. I will go like this and then I will take the decision. So this is the basically tree. Okay, but what is the problem here? The most important problem is how can we decide which particular thing will come here? How do you know Nifty 50 will come here or maybe Nifty bank will come here? कौन सा यहाँ सबसे पहले रूट हमारा कौन होगा, then उसका child कौन होगा? How can we decide? Maybe you have 5 feature, it means definitely 1 is root and 4 will be child, then 2 will be child, that depends. But who will comes here, how we can decide? That is the most important problem in decision tree. Okay, so suppose you have a, maybe you have a data like this, maybe you have data like this. So this is a feature F1, then F2, F3 is a target. So how do you know F1 will comes here? Then maybe there is a break on F1. So F2 will come here, maybe F3 will come here, then break and then taking the decisions here. So who will decide कि F1 यहाँ आएगा या F3 इधर आएगा, F2 इधर आएगा या F2 यहाँ आएगा, F3 आएगा? That is a real challenge. That is really challenge. Okay. So for that we have a 2 different method. Okay. Actually both are almost same, but there is 2 method. One is called entropy method and another is called Gini index. Actually, frankly speaking, no, if you check the performance of both, you will get the same answer. There is no like, you are not able to find much variation if you use any one of them. Now you will get the almost same answer. Even I practically use many times both and I got the same answer. So very difficult, you will get the same answer. So this is not a problem. You can use any one. It's not a big deal. And let's talk how these methods will define that. So another one thing is called let me first discuss the story. See, one thing is called impurity and one is called purity. Impurity. Another is called purity. See, impurity means like lots of information there. Okay, और वो सारे jumbles है, like एक directions में नहीं है. Purity means information is very very direction, like हमें लग गया कि yeah, this is the information here. But impurity means lots of information, you are not able to find which information is there. Lots of information are there. Okay, generally we trying to take the first node ऐसा हो जिससे कि हमारा डेप्थ छोटा से छोटा हो, लाइक ऐसा ना हो, ऐसा नोड बनाया जाए जिससे हम डिसीजन जल्दी जल्दी ले पाए. ठीक है, जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन यू. सपोज
I'm asking, is there any recession? Recession hai? Then you say yes or no. Suppose you say yes, there is recession. You are saying no, there is no recession. If there is a recession, I'm asking, do you have job or not? So do you have job? Do you have job? इसने बोला yes and maybe no. So do you have job? Yes. Then I'm saying if he recession है but इसके पास job है, then he will buy that particular product. Maybe you can take any product. But suppose recession है और इसके पास job नहीं है, he will not going to buy that particular product. Now again I'm saying recession है, so say no. Then asking job. So if say yes, then I'm saying he will buy the product. If you say no, so he will not buy the product. So देखो यहाँ पे हम ना बेवजह दो स्टेप्स में ले जा रहे हैं, बिकॉज द टोटल थिंग डिपेंड्स ऑनली जॉब है कि नहीं. अगर जॉब है तो वो प्रोडक्ट ले रहा है, नहीं है तो नहीं ले रहा है. आइदर रिसेशन है या नहीं है, सो देयर इज नो नीड ऑफ रिसेशन. वी कैन डायरेक्टली राइट जॉब and then say yes, no. If it is yes, you can say buy the product. If it is no, you can say he will not buy the product. So in this, yeah, please. हाँ बिल्कुल सही. नहीं, मैं यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ. ये तो कई सारी चीज हो सकता है, बस जस्ट एक प्रॉपर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेटवर्क छोटा से छोटा बने. बट वो बात को मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है. ठीक है. अब ज्यादा नेटवर्क लेके मैं समझाऊंगा तो समझ ही नहीं पाओगे इस बात को कि छोटा नेटवर्क का क्या मतलब है. बट आई एम इंटेंशनली आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल नेटवर्क टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इज इट पॉसिबल समटाइम्स वी अननेसेसरी वी हैव अ बिगर डेप्थ, जबकि हमारे छोटा डेप्थ से काम चल सकता है. Got it? But surely we have different features, different dependency. That is a separate story. We'll see that. But right now, I'm only focus on to make you understand. Yes, it is possible that we can reduce the depth. Okay, if you take the proper route after that. Okay. So how can we check the proper route? That is a really important thing. That's why we are using either entropy or Gini index. So what is entropy or Gini index? This is basically, we are actually trying to calculate information gain for all the attribute with the features. So we will calculate the information gain for all, like entropy or the whole system minus entropy of the particular attribute, and then we calculate the information gain. So suppose you have got the information gain is maximum for maybe rain. So we'll take the rain here. Then after we'll take the another attributes. So this is basically the basic math behind it. You have to calculate the entropy and so basically the information gain. But how can we calculate this using the entropy? So what is the formula of entropy? Very simple actually. See, entropy is nothing but just probability. So probability log 2p. So this is the probability of particular things, and then log 2. This is a 2. Okay, base is 2 log p. This is the entropy. So we can go for all the attribute and check whether for system minus the particular attribute, then we got the information gain. But there is no, you are not going to use the equations and all. This is just information की कैसे होता है. We can use this. See the skeleton kit. We have the skeleton kit, but yeah, I already told you, na, maths are there. You can try your own using Python. If you are not, you are not going to use anywhere scratch models, because already models are packages are there. So you are going to use packages only. Okay. But suppose for better understanding, you are writing a code maybe for support vector machine, name based decision tree, gain, and anyone, and you are not able to write, just ping me. I already wrote codes are there. I will share with you. Okay. So if anyone getting the problem, how can we write the code? So you can, but in the real scenario, you are going to use packages only. Okay.
we already have the packages, you have to call those packages. Okay, nobody will allow you to write a code, lots of code for that, for ML, these type of models. Okay, because already packages are there, just to going to use the packages. So your task is learn how can smoothly you can use the those packages. Okay, so let's go for decision tree. See, let me go for one data here. See, this is data. See, all of you, this is a data. Yeah. Okay, this is the data. See, so here you can see there is a colors of wine. Basically, the actually this is the data of wine. Okay, and using these features, we have the color of that particular wines, whether it's a red color, white color, and which type of color. Okay, this is very simple. So now let's go ahead. See, this is the value count of this. This is the two color, white color and red color. So this number of data is white and this number of red. So this is a wine color. Even I don't never seen the wine, so I don't know कि कैसा होता है. But just I'm using the data. So we have the white and red wine. Okay. So let's convert into 0 and 1. So make it numerically. So just this become like this. See here. Where it is. Yeah. See, this is the color I think we converted here red to 1, white to 0. That is okay. Red to 1 and white to 0. Okay, not a problem. Path D. I'm audible to you? Parth, I'm audible to you? Okay, now actually, I think yesterday you are traveling somewhere, na? So you don't like you are not able to attend yesterday class, है ना? So yesterday actually we covered the ML models like regression, logistic regression, naive Bayes, support vector machine, है ना? Today we are doing like the decision tree. Okay, so please watch, please go through the recordings. Okay, and if you find any problem, any doubt, you can always ask me. Okay, Parth. Okay, great. So anyone have any? Yeah, please. I will actually I updated, I uploaded, but I like मैंने मेल नहीं करा. So today I will mail. Okay. आज की रिकॉर्डिंग और कल की दोनों मैं मेल कर दूंगा आज शाम को. Okay. I forget to mail. Actually, no. See what happened now. Uh, See, so we got 100% accuracy, and 100% accuracy is not a anyway. It's not a good things to find 100% accuracy. But see, there's a disadvantage of decision tree actually, and it's always like a support vector machine. I told you there is a very big disadvantage of that. It will very costly, take lots of time because maths are heavily involved, very complex model. So it will take lots of time. There's a disadvantage of support vector machine. Same disadvantage of decision tree. What is disadvantage of decision tree? Always remember this. It's an overfit model. You train any data, first of all, it will make overfit. Always remember this. जहीं आप ट्रेनिंग करोगे ये overfit ही हो जाएगा बिना सोचे समझे. It will overfit. So once it will overfit, it's now your duty to come out from overfit. समझ रहे हो?
तो आपने जे ही रीड करा ये ओवरफिट हो गया, मतलब इसमें नो डाउट एट ऑल इट विल बी ओवरफिट फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू मेक इट come out from the overfit. So how you can come out from overfit, that is a really a big challenge, and let me explain in detail. See why it's overfit. Because we are not giving any penalty here, and it's taking like jitna man chahe utna depth bana lo, like it try to create node, then again node, then again node, until unless you are getting 100% accuracy. It's just creating the node. There is no कोई रोकने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है. जितना possibility है it will make the nodes, like जितनी possibilities है it will create the node, and then you will got the 100% accuracy for training. But when you go for unseen data, it is not giving performance. No, it's not necessary. It's not. I think Lakshmi is joined, na? Am I audible, Lakshmi? Okay, 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 great. So, Lakshmi, I think yesterday you are like suffered some with some problem. So, I will share the recording for yesterday. Okay, today I will share. So you can go through that, and see. Let me go through once again. See, guys. On Thursday, on Thursday, we will have a test. Okay, so please all of you join at 9:30 a.m. Okay, I will share the link at 9:30 a.m. on Thursday. Please all of you join at that time. Okay, so 9:30 I will share the link, and you have to go through the test, and then you have to send me your test like before 11:59 p.m. मतलब रात को, मतलब आपको थर्सडे तक ही सबमिट करना है, आप फ्राइडे को सबमिट नहीं कर सकते. ठीक है. देन ऑन फ्राइडे we will have a doubt class. So anyone, and again I will share link at 9:30 am. So you can join at 9:30 because क्योंकि अगर डाउट ज़्यादा होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. So that's why I'm share with at 9:30. If anyone have any doubt anywhere, you can join and ask to doubt. If you don't have doubt, okay, let's make it 9 a.m. because maybe depends ना. देखो sometimes तो what happen, very less people join for doubt. Maybe उनको doubt नहीं होता है. Sometimes lots of people join for doubt. So मैं इसको 9 a.m. कर देता हूँ Friday वाली क्लास को. So we'll start class at 9 a.m. You can join. If you have doubt, then please join. If you don't have join, you can enjoy. No problem in it. But still you have doubt, please join at 9 a.m. and ask your doubt. That's not a big deal. Okay. मतलब कोई issue नहीं है. You can join and ask your doubt. Okay. If you don't have doubt, you can enjoy. No problem in it. Okay. But you have doubt, genuine doubt, please. मतलब you have to have a genuine doubt, then you join. Otherwise, no need to join. Okay. But why I'm starting early, because sometimes lots of doubts there, sometimes no doubt are there. Okay, but I don't know about you, but I think you also have very less doubt, but sometimes you have lots of doubt. Okay, so that's why I started very early at 9 a.m. Okay, so anyone feel any doubt anywhere, you are welcome. You can always ask, and even I believe all you have my number. So even today, or maybe 1 year after 1 year, maybe after later 2 year, you have a doubt, you can ask me. If I am able to, I am saying if I am able. Maybe you ask something I am not able to, then how can answer? But if I am able, I will answer you. Okay. Still, I have in touch with my older and older students, so it's not a big deal. But yeah, if you have doubt, you can always ask the question. It's not a big deal. Okay. So what you are talking? We are talking decision tree. Okay. So yeah, so decision tree is like बिल्कुल ये फैलता चला जाएगा. It is started and like improving. So due to this, there is a overfit is there. So always decision tree will ends up with
ओवरफिट। आप जब भी ट्रेन करेंगे डिसीजन ट्री, ये ओवरफिट तो होगा एकदम, बिल्कुल आपके क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। इफ आई एम गोइंग टू ट्रेन अ डिसीजन ट्री, इट विल ओवरफिट। अगर आपसे कोई बोलता है नहीं ओवरफिट नहीं है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ओवरफिट तो होना ही होना है, एकदम श्योर है, ठीक है। सो हाउ कैन वी अवॉइड दिस? सी, once you train your decision tree, now you can, avoid. How can you avoid? Just let me explain you. See, suppose you have a tree. Okay, you have a tree like this, maybe like this. You have like this tree, and you want a very clean tree, you don't want like this tree, so you can just cut this, no, cut this. It's called pruning. Pruning means thoda chhatna. So just you are going to use pruning here. Once you build a tree, and you already know you have a tree, that tree is basically a what? The tree is basically overfit. So now let's prune this tree. Prune means just try to cut these things, okay? Because due to this only we are ending with overfit, so we have to cut these areas. This is called pruning, okay? So this is really important. Let's see how can we do this. So these are the confusion matrix, you already know this. Yeah, you know the recall and all. See, what I'm going to do, first I'm taking the depth in the list. I already know the maximum depth is 11. So I started from 1 to 11. See what happened here. If you check the data set now, only 6,000 data. Okay. And attribute is 13. Still here we got overfit. 100% हमने accuracy देखा था. हमने देखा था ट्रेनिंग के लिए accuracy 100% थी. If you go there, so you'll find here. Yeah, see, 100% accuracy थी, है ना? So that is a really a challenging task. But see what we can do. देखो मैंने एक लिस्ट बनाया. We already know that maximum depth is 11. So I am trying to take 1, 2, 3, 4, 5 till 11 depth, and I am going to check my tree with one depth, 2 depth, 3 depth, 4 depth, 5 till 11 depth. जिस पे बेटर रिजल्ट मिलेगा उसी को सिलेक्ट कर लूंगा. हो सकता है 11th मिले, हो सकता है 9th, we don't know. So we can do like this. First thing. Second thing, how much attributes are important for me? I don't know. Maybe sometimes we need less attribute. That's why I'm taking feature. एक लिस्ट बनाया फीचर्स के लिए. टोटल 12 फीचर्स थे, मैंने 12 के बनाया. दोनों को कंबाइन करके मैं रन करूंगा. देखो एक होता है ग्रिड सर्च. दिस रियली इंपॉर्टेंट. सी, whenever we want to, find optimized parameter, it's called hyperparameter, we can use grid search. Actually grid search will take all the possible combination and it will come with a best result. या तो आप खुद से मैनुअली करो या ग्रिड सर्च को लगा दो. ग्रिड सर्च ऑटोमेटिकली सारे पॉसिबल तरीके लेगा और वहां से वो बेस्ट रिजल्ट आपके लिए निकाल के लाएगा. दैट इज रियली ए गुड थिंग अबाउट द डिसीजन ट्री. सो लेट मी रन दिस. देखो अब मैंने ग्रिड सर्च बनाया यहाँ पे डिसीजन ट्री के लिए. देखो मैंने यहाँ पे एक्यूरेसी लगाया. अब ये इट विल टेक टाइम, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रिड सर्च में क्या दिया है, एक तो डेप्थ दिया है. डेप्थ में 1 से 12 डेप्थ था और फीचर नहीं 113 था या 1 से 11 था और फीचर दे दिया. इस दोनों को जी सर्च में यहाँ पे डाल दिया है. देखो यहाँ पे डाला है ग्रिड सर्च में. अब वो सर्च कर रहा है कि बेस्ट रिजल्ट क्या होगा. देखो फिट कर दिया है. इट इज ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट. सो ये हो गया डन. देखो ये बेस्ट रिजल्ट इसने ट्राई किया होगा. सो वी विल फाइंड दिस लाइक दिस. नाउ चेक द एक्यूरेसी हियर. आई थिंक दिस इज द मॉडल ना. This is the model. Let's try to check again the accuracy part. So model dot score extra. See, now it's not 100%. See, prior it is 100%. After the pruning
it's not 100%. Yeah, still it's 100% you can say, but it's not exactly 100%. Okay. See, if you go for a real data set, it is very very helpful. Very less data, but यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो 100% था. Problem with 100%. कभी 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 you can't say to your client कि मेरा मॉडल 100% आ रहा है, अदरवाइज आप फंस जाओगे, है ना. अगर आपने क्लाइंट से बोले मेरा 100% मॉडल एक्यूरेट आ रहा है, तो गलती की तो आपने कोई चांस छोड़ा ही नहीं ना मॉडल में, चाहे कितना भी कम डेटा हो, कितना भी क्लीन डेटा हो. बट इफ यू से 100% ना, आपने थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़ी है अपने लिए. इफ यू ही विल गेट एनी प्रॉब्लम, ही विल तुरंत तुम्हें ही विल कॉल यू एंड से कि यू सेड 100% राइट नाउ मॉडल इज नॉट वर्किंग. Even he get a 1% of error. That's why 100% is very 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 big problem. Okay, so now see, we are come out from that particular problem. Okay, so this is really important. See this is really important. So we are getting for test 97% accuracy, 97% is really good. Okay, now see, first of all I'm trying to share this file. Before going to data preparation, let me share this file and see. We discussed four model. See, we discussed naive base, we discussed decision tree, we discussed support vector machine, we discussed KNN, and we discussed what logistic regression. So these are the five classification model we all discussed. Four yesterday, one today. Now I'm giving one data, and you have to apply all the five model on this data and come with which one is giving the best result. Okay, this is your task, you have to do this. So let me go for one data. That is really important data. Let me say where it is. Cancer. See, this is the data. Okay, this is the data. Let me download this data.
See, this is the data. So let me share this data to all of you. So I share the data to all of you. Please read this data, all of you. आप लोग को डेटा मिल गया? All of you say yes, no. Please read it. Please read the data. Please all of you read the data. So see, अगर आप लोगों ने read कर लिया, all of you complete read now. See this, your data looks like this. First of all, what you have to do, remove this ID. There is no need of ID basically. So इसको remove कर दो पहले तो, है ना? So remove this ID basically. Start from 1 now. Automatically ID will be removed from here. So now there is no ID here. Okay, done. See, now इसको ये this is your y. Okay, this is your target. So put into y. So y is equal to data dot what? See this, give this name directly now, diagnosis. So it will automatically comes here. है ना? Maybe give into double, so it will come into pandas from. So this is your y. See this y. Yeah, this is your y. Okay. And what is x? X is just like simple data dot what? Data dot ilog. Start from 1. So now this is x. Clear? Any doubt, anyone in this? Anyone, any doubt in this? Just let me know, yes or no. Clear? Okay. Now first I will see if you check this y. See, there is a here we have a m and b. If you see the value count now, you will get this. Dot value count. See, we have two things, b and m. So we have to build a model and we have to predict, like, see, these are the features कि उसका रेडियल जो भी वो एक्चुअली ये ना जो कैंसर की जो पर्टिकुलर वो होता है ना, जस्ट अ मिनट गाइस ना, एक सेकेंड ना. हेलो, ऑर्डर अमेज़न से एक सेकेंड ना, एक सेकेंड गाइस, आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट. Yeah, see this guys. So basically there is the data, this one. See, so this is our x, है ना? देखो ये हमारा जो है फीचर्स हो गया टोटल. ऑडिबल ना? हाँ, ये देखो, ये जैसे कि पूरा फीचर हो गया जो अब देखो ये ना ज़्यादातर मतलब
मैं इस पे ज़्यादा आइडिया नहीं दे सकता। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो गूगल करके पढ़ सकते हो। ये कैंसर के लिए ये सब टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे जो भी ये सब टर्म्स है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वॉस, टेक्सुअल वॉस, ये क्या है। तो आई एम नॉट actually give you better understanding for this particular terms, but if you google it you will find that, क्योंकि ये terms हैं उसके लिए। अब ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा। ओके, so if you want to know more about this you can google it actually। if you want to do a real project always try to understand what is the meaning of that particular feature, but right I'm not focused on that, I'm trying to just only apply the models। बट इफ आई एम ट्राई टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट डेफिनेटली आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि क्या क्या है, ठीक है। अदरवाइज हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं अगर हमें उसके बारे में आइडिया नहीं होता तो, ठीक है। बट राइट आई एम नॉट फोकस इन दैट एनीवे। सी दिस। सो फर्स्ट टास्क इज कि हमें क्या करना पड़ेगा, एनीवन कैन गाइड मी। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू दिस। See, this is B and M. Yeah, we have to correct। Yeah, we can use label encoder। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर डिसीजन ट्री में if you see मैंने लेबल encoder नहीं यूज किया था आई थिंक। वेयर इट इज, या सी आई डायरेक्टली ना रिप्लेस्ड इट। तो यही अपन यूज करते हैं, डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं। You can do the label encoder as well, see it's not a problem, we can use label encoder as well, but right now I'm directly doing this, I'm just taking this one and diagnosis। Okay, so I'm making this और लेबल encoder भी करेक्ट है, ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ डायरेक्टली डूइंग दिस। सो माइनॉरिटी कौन सा है, एम ना। सो एम को देते हैं पॉजिटिव और बी को देते हैं 0, ठीक है, बी है। सो नाउ डन, आई थिंक इट्स डन। या सी दिस इज डेटा। सो ऑल ऑफ यू प्लीज डू टिल यहाँ तक करें, टिल दिस। So basically now we have x and y. The thing is now we have x and this is my y. Now your task is to apply all this model on this data। अब पहले आप इसको स्प्लिट करें ट्रेन टेस्ट में, चेक करें स्कोर एंड देन लेट मी नो कि which model is giving the best result। So please open your code one file and try to do use all the models। Please do fast all of you, then I will do। पहले आप लोग करें उसके बाद मैं करूँगा। Sorry, yeah।
या हेलो, यस, डन। क्या है तेरा, क्या दे रहा है? ओके, ओके, कोई नहीं। मैं भी सारा यूज करूंगा, डोंट वरी। अच्छा, सबका आ रहा है, मेघना भी आ रहा है, ओके। हाँ, नेक्स्ट अप्रोच पे, हाँ नेक्स्ट अप्रोच। नेप बेस को फिर छोड़ के दूसरा करो अप्लाई।
Done, guys? Please do. Very good, Aditya. Very good. Very good, Ariman. Okay, great. No problem. Others done? Please do fast.
Tanishq done. Very good. So how many of you done? Aditya done. Aryaman, Tanishq. Only three. Others. So why you guys are taking time? I don't know. You have to already data. You have to split it, apply all the model, check the accuracy. Thank you, Anurag. Thank you, Abhishek. Others, what are you doing, man? See, only Lakshmi and Parth. Maybe both will take time. Otherwise, all of you have to do very fast. Thank you, Vatsal. Done? Good. Bhigneshwara done? Very good. Okay. Okay, very good. Lakshmi, you also done? Very good. Very good, Lakshmi. Okay. So, see, like you guys are done. Let me do this same problem. मैं भी इसको करता हूँ. Okay. So, before that, let's do one thing. Let's go for a break. Okay. I'm also sitting for last 1.5 hours. So, let's go for a break. Then we will come back and I will do this. Okay. For I will use all the models for the same data set. Okay, so just I don't exit now, be there. We'll come back. What is time? 11:41 now. So let's take our 19-minute break. So 19. So this is 41. So let's meet at 12 p.m. and then we'll start. Okay, correct. So let's go for a break. Let's take a cup or maybe tea or coffee. Then we'll back. Okay. Thank you. Hello. Hello. Are there guys? Okay. So we have x and y. Now let's do this. Let's send the data first here, x comma y. Okay. स्प्लिट यहीं पे कर लेते हैं. So first we'll do the split. अच्छा नल वैल्यूज भी हैं. ओके कोई बात नहीं. Let's delete here first. एक है. अच्छा यू आर सेइंग लास्ट कॉलम क्या? वो तो मैंने खैर हटा दिया था पहले ही. ओके यू आर सेइंग दिस कॉलम ना, ओनली दिस कॉलम ना. हाँ वो गलती से आ गया. वो तो मैंने हटा दिया था वैसे. सी मैंने यहाँ पे आई लॉक से हटा दिया था, उस कॉलम को हटा दिया था. उसके बाद भी चेक करते हैं कोई नॉल वैल्यू है क्या. नहीं है. ठीक है. So now we have x and y. Anyway, ठीक है. स्प्लिट हो गया. देन एक एक करके करते हैं. फर्स्ट लेट्स फर्स्ट टेक केनिन. ठीक है.
नेक बेस हो गया. स्टिक हो गया. हाँ, और नेक बेस ना. Okay, you are saying कि I'm using. No, first one is KNN. Sorry. Good, 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 good. This one is nape base. इसमें डिसीजन ट्री नहीं है. लॉजिस्टिक पे रुक गया है क्या? सेकेंड वन इज व्हाट? केनन. ओके, एसपीएम ना.
एक्चुअली एसपीएम रन ही नहीं करना चाहिए था। मैंने एक पैरामीटर दे रखा है ना। लेट मी रिस्टार्ट मारने दो ना, बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारा एसपीएम ज्यादा टाइम लिया था क्या आप लोग अभी एसपीएम? सी आइदर यू कैन डोंट यूज ना सी। जैसे सी एक पैरामीटर है ना, जैसे ओवरफिट को ब्रेक करता है वो, तो इससे वैसे बहुत टाइम लगता है। तो या तो अब इसको हटा करोगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो अभी ये फास्ट होना चाहिए। सी केनन लॉजिस्टिक डिसीजन ट्री एक बार में आ गया, सो इट्स डन ना, वेरी सिंपल। कल बताया था ना आप लोगों को एसपीएम के साथ एक प्रॉब्लम है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सी दिस, सो लॉजिस्टिक इज गेटिंग वो ना। आप लोगों ने क्या बोला था, बेस्ट क्या आ रहा है, नेप बेस आ रहा है एसबीएम की, और समवन इज सेइंग कि नेप बेस इज नॉट वर्किंग। So we are getting na naive basically we received we got na. Okay, no problem. So let's try to do one thing. You have to return the model now, which is the best we want to return the model. So how can we return the model? Like from this function we need a model which is getting the best result. So write a program here. So what we can do, right here one thing, that is, sorry, not here, right here max is equal to 0. Okay, and then check here if this one score is greater than max. If it is greater than max, then max is equal to this and model is equal to this one. Okay, do like this. Now copy this, go into this and make other name, maybe logistic, say LG logistic, LG logistic, LG logistic. So if LG dot score is greater than max, so that's max, no, yeah, it's greater than max. So now max is equal to LG dot score and model is equal to LG. Got it?
Now come here, svm छोड़ दो, put it here. So sorry, now if it so this is Gaussian, no? So make it GB, Gaussian mass GB. So GB dot fit, GB dot score. If GB dot score is greater than max, put max is equal to GB and model is equal to this. Okay. Then here come again, copy this, come put it here. So now this time this is decision tree. Make it dt, 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 dt. Okay. X test, Y test, dt. Dot score is greater than max. Max is equal to dt dot score, and model is equal to dt. So what we are going to return? Return model. Model को return कहाँ लेते हैं? The model will be saved into that. और कुछ return का है? Nothing. So now when you run it, just put here model and make it run it. So now see this. Which is the maximum one? KNN, this one. Logistic, no? See, model will be logistic. How can we check it? Model dot score x test, comma y test. Oh sorry, so data यहाँ पे भी होना चाहिए. Just copy this one. Yeah, 95 point something. See this one, 95 point something. This one 5 to last में है, 5 to C correct है. So here we are comparing all the models and returning only which model which is the best result. Anyone any doubt in this? See, actually, no, that is so like if you want to use the matrix and all, then you can do this. जो मॉडल डॉट स्कोर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट वो काम कर देता है. Okay, suppose you use model dot score, it will automatically predict X test. तो देखो YP test and compare with Y test, it will return the result. Got it? नहीं, see. करेक्ट करेक्ट, वो जब हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह को देखना है, सब कंपेयर करना है, देन वी विल डू लाइक दिस. ओके. Otherwise directly we can check the score. We are always able to check the score. Any doubt? Anyone still doubt, please ask. ठीक है, clear? So this is the model. Now let's see data preparation part. See,
Data preparation is very important. Okay, it's really important task. I'm going to take 4 5 steps. See carefully. Always remember this: whenever you have data, first thing what you have to do, you have to delete all the columns, all the columns which has zero variance. So what is meaning of this? Actually, if if in your data any column which has zero variance, it means that column has a unique data. Like suppose in your data set there is one column which value is only 3, like this. So this is a meaningless data. Just it's increasing the number of feature. It will not going to contribute anything in the model. So if this is there, please delete this. So whenever you have a data set and you find any column which has a zero variance, first delete it. See, data I already told you yesterday. Data preparation is very broad term. It's not able. I'm not able to. Anyone not any not able to cover data preparation in the training like this. See, data preparation you learn with experience. Okay, like uh, last 4.5 years, I have different experience. So in training, it's not possible to give all those things because even I am not able to recall it. Suppose I got the problem, then I recall it. Okay, this problem I can do like this. But in teaching, I'm not able to recall it, which type of things I can teach. But yeah, there are some unique things, some proper thing. Always we are doing this. That those things I'm trying to cover. Okay. So this is like this. We can delete that particular thing. We will see this. How can we do this? Right now, I'm just focusing कि क्या क्या करना है अपने को. So don't you worry. We will do this. Okay. First thing. Now let's go for the second thing. If in your data if in your data any repetition is there, please delete the row. Suppose this is a data like 3 4 1 2 3 6 2. Yes, again there is data like 3 4 1 2 3 6 2. Yes, see this particular row and this row both are same, both are same. So whenever you got like this, you have a same information in a different row, delete this. Only just put save this row and delete this. Suppose there is another row, follow the same information, also delete this. So you will have only this row. Okay. So because this is a redundant data, there is no information in it, only increasing the number of row. So always delete this. So whenever you come with the data, try to find is there any columns we have zero variance, just delete it. If there are some rows we just have similar data, there is no variation in it, go and delete it. Even don't think like just delete it. Clear? Both things? Any doubt? Anyone? Is there any doubt? Anyone? Very good. Very simple actually. Now let's go for third thing. Suppose you have a data. Suppose you have a data and you find there are some column, which has like
null values. Here null value, here again null value, maybe here null value. So and many anywhere like null values. So see, there are different steps to handle the null value. First step is just drop it. So every time we can't drop blindly, but suppose there's a very, maybe you have 1,000 data, 1,000 row, in 1,000 row only two null value. So just delete this null value, because in 1,000 there is two null value. We are not going to do anything with this. So just you have to delete that null value. Okay, don't do anything, just drop the null value. But sometimes those null values are really important. Okay, maybe like in 1,000 we have 100 null value. So if you 100 delete 100 value, maybe you have left with only, so you are going to lost 100 data, because 100 null value means in every column there are some information there na. Maybe here you get null value, but here there are information now. So if you lose this null value, you are also losing this information. So 100 null value, we can't avoid this. Okay. So we have to deal something else. Third step is, suppose in a particular column we have 60% null value. Maybe here in this column in 1,600 null value. So drop this column itself. क्योंकि अगर 60-70% नल वैल्यू है, तो अगर उसको फिल भी करेंगे तो बहुत ही रेंडम सा फीलिंग हो जाएगी, एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. सो वो जो कॉलम होगा, इट विल गिव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द मॉडल. मे बी दैट इज नॉट हेल्पफुल फॉर अस. जस्ट डिलीट दैट पर्टिकुलर कॉलम. ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स ओके. एनी डाउट इन दिस? एनीवन? एनी डाउट? This is the three step. First step, drop when very less. Here null value drop. Here column drop. Here we have to do something. So we will see that different approach. How can we do this? How can we feel this? Okay. Any doubt? Anyone? Please let me know. No? So let's open the yeah, please. Second step, see, I'm going to explain all the three steps. First step, so when there is very less null value, drop the null value. Third step is when very high null value in particular column, drop the column. Second step is, suppose you have 1,000 data and maybe you have 100 null value, so we can't drop that particular column. So in that case, yes, this is the data cleaning. Na? Data preparation means data cleaning. ठीक है, मानता है. So the second case, we can't delete it. We have to fill the null value. Fill मतलब कुछ उसके जगह पे proper value को put करना. So let's see how can we do this. Okay. So give me a minute. Let me open the files. See this. हाँ देखो यार. So मैंने सारी फाइल ओपन कर ली. देखिए ध्यान से. See carefully one by one. See carefully. देखो ध्यान से. Let's first talk about this. Just a minute. Left it. Leave it. Yeah. See, I told you, this data has zero variance. First, delete the column. See, let's read one data here. Yeah. See the shape of this data. Total 50 column in this data. Okay. Total 50 column in this data. Right now. So I want to check if any column which has like no variance, I want to delete that column. Okay, so I have to check it first. See, how can I check it? See, there is a here in sklearn feature selection, import variance threshold. So I'm importing this variance threshold. I'm saying k is equal to variance. Yeah, I'm saying k is equal to variance threshold. Threshold is equal to 0. So if
थ्रेशोल्ड इज जीरो मतलब मैं वेरिएंस थ्रेशोल्ड को जीरो पुट करता हूं, जीरो पे करता हूं, जीरो जिसका थ्रेशोल्ड होगा उस पे मैं वर्क करेगा। तो मैंने डेटा को इसके अंदर से पास किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया, ये डेटा हो गया मेरा। नाउ सी द शेप ऑफ द डेटा बिकम 49। डेटा का सेट 50 था, फिर ट्रांसफॉर्म करना 49 हुआ। इसका मतलब एक कॉलम ऐसा था जिसका वेरिएंस थ्रेशोल्ड जीरो था, समझ रहे हो, जीरो या उससे कम, उससे कम तो हो नहीं सकता, जिसका वेरिएंस थ्रेशोल्ड जीरो था। लेट्स सी वो कौन सा हो सकता है, एक बार ट्राई करते देखने का कि क्या ऐसा कौन सा हो सकता है जिसके अंदर होगा। सो लेट्स सी हियर। देखो ये मैंने क्यों नहीं किया ना, एक्चुअली ना पूरा कॉलम हम देख नहीं पा रहे थे। तो इफ यू राइट ना डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम, सो इट विल शो ऑल। व्हाट इज दिस हेड? सी नाउ सी। सो देखो ये अगर लिखोगे ना कॉलम डिस्प्ले मैक्स कॉलम 50, इसका मतलब टोटल कॉलम दिखेगा यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू सी, देखते हैं कौन सा ऐसा कॉलम है जो जिसमें डेटा एक ही है बिल्कुल। सी दिस कॉलम 22 ओनली जीरो हियर। लेट्स ट्राई टू सी वेदर जीरो है कि नहीं सच में। डेटा 22, see only zero. If you write value count, see this only zero, all the 937 data is zero। इसीलिए जब हमने वेरिएंस थ्रेशोल्ड से इसको पास कराया यहाँ पे रीड करने के बाद, सी जब हमने वेरिएंस थ्रेशोल्ड से इसको पास कराया तो ये 49 हो गया, क्योंकि वो एक जो कॉलम था वो डिलीट हो गया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर यस नो? क्लियर? एनीवन एनी डाउट इन दिस? अभी मैंने आप लोग समझाया ये बात कि अगर इफ एनी डेटा सेट, इफ एनी पर्टिकुलर कॉलम विच हैज जीरो वेरिएंस, दैट इज नॉट यूजफुल because it's not going to give any contribution to the model. So if it's not going to give any contribution to the model, why then we are हम उसको लेके क्यों रखे? If it is not helpful, then why we put it, है ना? So let's delete it. So that's why I deleted. Okay. Now let's go for another model that we already saw, कि अगर कोई भी कॉलम हो जो रिपीट कर रहा हो, so we have to delete that. Let me show you how can we do this. Yeah, see, this is the data. See your data. If any rows which has the similar information, we have to delete this. See, why am I using this one? Not interested in variance. We already see this. So मैं इसको delete करता हूँ. Yeah, see this. So this is like data. I want to check, is there any duplicate in this or not? So just write data dot duplicated. See, let me run this. See, if I write data duplicated, I write x dot n is equal to true, it means there is some duplicate value in this. So let's find which is this duplicate. See this. देखो ये डुप्लीकेट है 4.9 3.1, दिस डुप्लीकेट। देखो ये भी एक डुप्लीकेट है, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका एक डुप्लीकेट डेटा में होगा, मतलब ऐसे दो होंगे, और यहाँ पे दो दिख रहा है, इसका मतलब ऐसे तीन होंगे। तीन होंगे तो एक ओरिजिनल होगा, दो डुप्लीकेट होंगे, और ऐसा दो होगा तो एक दिख रहा है और एक डुप्लीकेट है। तो इसको डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करते ही हमारा शेप क्या हो जाएगा, तीन कम हो जाएगा। देखो अब ड्रॉप करने के बाद डुप्लीकेट फेल हो गया, और देखो शेप 150 था, तीन डिलीट हो गया, जो तीनों डुप्लीकेट थे वो डिलीट हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू हैव डेटा, blindly check, is there any column which has zero variance, delete it. Is there any rows which has similar information, delete those rows. Any doubt in this? Clear? Please ask. Sorry, I'm not able to what you are. Please ask clearly. I'm not able to understand what you are. हिंदी में पूछो, हिंदी में पूछो। Clearing noise of data. Correct, correct. We are not removing the noise from that.
No. See, don't mix with decision tree. Decision is something other things. At that time, you are applying the model. Cleaning is happening before the models. Okay. See what we're trying to do here. If in the data set, if there is a column which don't have any information, like suppose maybe in this data set you have a column which has the maybe wrongly there and only 0 0 or maybe only 10 only 9, so we are not going to do with that data now. There is no information available in that particular column. If only unique value starting to end like 5 5 5 5 5 only repeated value, so what we are going to do with that column? Meaningless, na? So that's why we delete there. Okay. Second, please. मिसिंग वैल्यू आई विल कम. मैंने अभी थ्योरेटिकली बताया, अभी आता हूँ उसमें मिसिंग वैल्यू के लिए. सी वेन एवर देर इज ए मिसिंग वैल्यू इट मीन्स देर इज ए नल वैल्यू. ओके, तो अभी आते हैं नल वैल्यू कैसे डील करता है. अभी तो ये हुआ ना, अभी नल वैल्यू पे आ रहा है. ठीक है, डन यहां तक. ठीक है. सो लेट मी शेयर दिस फाइल टू ऑल ऑफ यू. पहले डेटा क्लीनिंग वाली फाइल शेयर कर दूं, देन आई विल कम टू नल वैल्यू एज वेल. एक सेकेंड ना. Yes, what you are asking? Please share. Decision tree. Okay. Shared. Shared. Okay. So now go for that null values. How can we do this? See, there are different methods like statistical imputer, Cannon imputer, and iterative imputer. Let's go for first statistical imputer. Let's see how can we do this. Let me run this. See, is there a null value? Yes, there are null value. See this null value, lots of null value, true, true, true. टोटल 7 कॉलम है जिसमें नल वैल्यू है और टोटल नल वैल्यू 645 है. इसका मतलब इस डेटा सेट के अंदर नल वैल्यू है टोटल 645. ठीक है. सी इन दिस डेटा सेट कहाँ का नल वैल्यू है? एजुकेशन में नल वैल्यू है, सिगरेट पर डे में है, जहाँ जहाँ नल वैल्यू है ट्रू ट्रू है. आई वॉन्ट टू फील दैट नल वैल्यू. ओके. See, this is statistical imputer. So I am importing from import simple imputer, and strategy is mean. Mean means what happen. देखो ये बहुत आसान बात है. मतलब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मीन से ही फील करना चाहिए. जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. इट डजंट मीन कि आप मीन से हर बार अपने डेटा को, अरे अपने नल वैल्यू को आप फील कर सकते हैं. आप मील से भी कर सकते हैं, मीडियम से भी कर सकते हैं, मोड पे भी कर सकते हैं. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन कि आप किस पे करना चाहते हैं. और वो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन डेटा एंड योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच. क्योंकि वो डेटा का क्या है, उस डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से होगा. ब्लाइंडली नहीं हो सकता. बट मैं फिलहाल बता रहा हूँ कैसे करते हैं. यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ क्या करते हैं, अभी फिलहाल बता रहा हूँ कैसे करते हैं. सो यू कैन use any one that, either you can use mean, mode or medium, any one of them. Very simple. See carefully what is right from sklearn dot imputer. See this here. See here is right now from sklearn dot import simple imputer.
एंड देन सिंपल इंप्यूटर स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू मीन। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मीन फिल करना चाहता हूं जहां भी, इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में जाओगे, जैसे इस कॉलम में जहां जहां नल वैल्यू होगा वहां वहां उस कॉलम के मीन से वो फिल कर देगा। तो जिस जिस कॉलम में होगा उस कॉलम के मीन से फिल कर देगा। दिस कॉल्ड सिंपल इंप्यूटर स्ट्रैटेजी मीन। इवन यू कैन अप्लाई मीडियम और मोड, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो दिस इज द सिंपल इंप्यूटर। फिट कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म करने के बाद देखो देयर इज नो नल वैल्यू इन दिस। सो यू कैन यूज आइदर मीन, आइदर मीडियम और मोड। आया समझ में ये वाला नल वैल्यू को डील करना? सिंपल है काफी। क्लियर? So in data set, in any column we can either use mean, mode, medium. That totally depends on data. ऐसे नहीं बोला सकता है क्या यूज होगा कहाँ पे, डेटा पे ही बोला सकता है। डेटा देखे कि यहाँ पर यूज होना चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट कैसे यूज कर सकते हैं? दिस ओनली यू कैन यूज द सिंपल इंप्यूटर। वेरी सिंपल। सिंपल इंप्यूटर गिव द स्ट्रैटेजी, आइदर यू आर यूजिंग मीन, मीडियम और मोड। सेकेंड वन, a बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट लेट मी एक्सप्लेन यू। सी, इवन आई टोल्ड यू वन डे, इफ यू रिमेंबर ना, मैंने दिन आप लोग को बहुत बारीकी से इस चीज को समझाने की कोशिश करी थी। आई डोंट नो हाउ मच यू कैन रिमेंबर नॉट। सी, एक सेकेंड, सी दिस, if your data looks like this, it means no, this is symmetric. In the case of symmetric, mean, medium, mode तीनों का तीनों यही होगा, ठीक है। बट अगर उसके अंदर राइट स्क्यूड हो या फिर मे बी लेफ्ट, जैसा भी हो, दैट टोटली डिपेंड्स, लेफ्ट स्क्यूड हो, मोड सॉरी मीडियम विल बी इन द मिडिल, मीडियम। So here you can use anyone, here you can use medium, okay? But again I am saying ऐसा जल्दी मिलेगा नहीं कि इतना आसान होगा। जैसे let me explain you. Suppose you are working in a data set that is salary based data set, ठीक है, सैलरी बेस्ड डेटा सेट। अब कुछ डेटा सेट में सैलरी है, अब कुछ सैलरी मिसिंग है, यू वांट टू फिल द मिसिंग वैल्यू। हाउ कैन वी फिल द मिसिंग वैल्यू? मेन, मीडियम, एवरेज क्या लगाओगे? अब ऐसे नहीं सोच सकते, अब देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। सैलरी उस डेटा सेट के अंदर पोजीशन दिया होगा कि कौन सा पोजीशन में कौन है। मान लो कोई सीनियर डेटा साइंटिस्ट है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई कुछ भी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब नल वैल्यू फिल करना तो पहले तो डेटा को बाइफरगेट करो, डेटा साइंटिस्ट का निकालो, उसमें से देखो कितना दिया हुआ है, उसका एवरेज कैलकुलेट करो, फिल करो। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सब चीजें बस एक आइडिया में दे रहा हूं, इससे काम नहीं चलेगा। टोटली डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ आप झेलोगे तभी देन यू कम विद आइडिया। ओके, बट फंडामेंटल ये रहेगा। बात समझ में आ रही है? सो ये चीजें जो बता रहे हैं एज यूजुअली यूज हो ही नहीं सकती, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द वेरी फंडामेंटल थिंग्स, बट ये ऐसा यूज नहीं होगा रियल केस में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा वी डोंट नो। जब तक प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है वी कांट से कि क्या होगा, बट यार सिंपली वी कैन से कि ये होगा, है ना। जैसा अभी मैंने बताया सैलरी वाला, अब ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम आएगी देन यू कैम टू नो ओके यार ऐसे फील नहीं करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले हम डेटा को ही ब्रेक कर देते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये इतना आसान नहीं होता जो बस बता रहा हूँ। यू कैन ब्लाइंडली आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बट हाँ जो पिछला दो मेथड था आप ब्लाइंडली उसको यूज कर सकते थे, बट इसको आप ब्लाइंडली यूज नहीं कर सकते। गॉट इट? क्लियर? सो दिस इज स्टैटिस्टिकल। लेट टॉक अबाउट केएनएन मेथड। सी, केएनएन इज क्या बोलता है, ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड ये बोलता है कि यार देखो तुम्हारे पास डेटा है, मान लो इस पर्टिकुलर कॉलम में सम नल वैल्यू है, तो वो ये बोलता है कि मैं इसको टारगेट बनाता हूँ, इसको टारगेट बनाऊंगा, बाकी सबको फीचर बना दूंगा, इस पूरे को फीचर बनाऊंगा, इसको टारगेट बनाऊंगा, टारगेट को वाई में रखूंगा, बाकी को एक्स में रखूंगा, ठीक है। और इस डेटा सेट को जो यहाँ पे नल वैल्यू है इनको हटा दूंगा, उसके बाद ट्रेन कर दूंगा, ट्रेन करने के बाद इसको यूज करके इसको प्रिडिक्ट कर लूंगा जो नल वैल्यू है। अच्छा बहुत जल्दी बोल गया, पता नहीं समझ में आया किसी को ये बात में क्या बोला? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट कवर्ड हियर? नो ना, थोड़ा मैं तेज चला गया, मैं फिर से बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था। सी केयरफुली। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है, ये बोलना चाह रहा है, सी यहां मैंने से लिखा हुआ है,
तो क्या लिखा है, ए गुड अप्रोच टू मिसिंग डेटा इम्प्यूटेशन इज टू यूज अ मॉडल एंड प्रेडिक्ट द मिसिंग वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। सपोज मेरे पास एक ये डेटा सेट है, देखो, और ये जो है ना फीचर है यहाँ पे F1, एक सेकेंड, ये फीचर है F1, देन F2, F3, F4, F5 और मान लो F6 है। यहाँ नल वैल्यू है, यहाँ नल वैल्यू है, यहाँ नल वैल्यू है, यहाँ नल वैल्यू है और यहाँ नल वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डेटा से नल वैल्यू को निकाल देंगे। इस नल वैल्यू वाले को पकड़ा, उठाया और यहाँ रख दिया। इस नल वैल्यू को फिर पकड़ा, उठाया, इसके नीचे चिपका दिया। इसको उठाया, यहाँ से पकड़ा और यहाँ चिपका दिया। तो ये नल वैल्यू वाला डेटा आ गए, जो जो नल वैल्यू इसके अंदर पड़े थे। तो ये सारा ऐसे डेटा आ गए, नल वैल्यू आ गए। और यहाँ से डेटा हमने हटा दिया। यहाँ ये डेटा नहीं है, यहाँ ये डेटा नहीं है, यहाँ डेटा नहीं है। अब क्या इसके अंदर नल वैल्यू बचा है? नहीं ना, हटा दिया ना नल वैल्यू यहाँ से। सही है, नो बोलो यार। इज देयर नल वैल्यू हियर? नो, वी ऑलरेडी डिलीटेड, जस्ट नल वैल्यू यहाँ पे आ गए। तो अब डेटा बन गया। अब सपोज मुझे पता चला कि इस F2 में देयर इज अ नल वैल्यू हियर, आई वांट टू फिल द नल वैल्यू। सो व्हाट आई डिड, आई मेक इट टारगेट। मैंने इसको टारगेट बनाया, वाई में F2 को रखा और बाकी सबको F1 F2 को F1 F3 F5 F6 को X में रखा। और आई ट्रेन द मॉडल। ट्रेन करने के बाद मैंने इसको और इसको लेकर के प्रिडिक्ट कर लिया F2 को, और प्रिडिक्शन के बाद जो वैल्यू आया उसको यहां पे पुट कर दिया। दिस इज द another approach to filling the null value. Got it? Anyone, any doubt, please ask. Anyone, any doubt, please ask. Very good, very nice. Let's go here. Let me run this. See this, here I am using KNN imputer. KNN imputer data डालो, automatically null value सारा आप देख लेगा। and देखो after that there is no null value. So actually here you are using KNN model for doing this. Another approach is the same approach like training, but this is called iteration imputer. What is this? Defining a model, predict the missing value, just like this, when all the features repeat. See, it's actually the same thing जो यहाँ पे था, but यहाँ पे क्या ना उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे, इसलिए इसका है इटरेटिव इम्प्यूटर। सेम लाइक केनन इम्प्यूटर, ये भी केनन इम्प्यूटर की तरह वर्क करेगा, बट बार बार रिपीट होगा। समझ गए? इट्स जस्ट लाइक अ केनन इम्प्यूटर, ओके, बट इट विल रिपीट मेनी टाइम्स। इसके रिपीट करने से काफी फायदा हो जाता है। Got it or not? Say yes, no, all of you. Anyone, any doubt in this? किसी को कोई दिक्कत है? So this we just completed. How can we deal with the null value? Okay. So now again another thing is very important. We have to deal that also. That is basically the outlier detection. क्या हमने cover कर लिया? Have you already covered? How can find outlier? How can remove those? अच्छा, so we already did how can we delete the null value from the data? I don't believe we completed. है ना, we don't complete it. Maybe थोड़ा बहुत ठीक है। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट, क्या बज रहा टाइम? ओके, सो लेट्स गो फॉर लंच। लंच के बाद हम ना स्टैट्स पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ओके, सो विल कंप्लीट द स्टैट्स फर्स्ट बिकॉज दैट इज नीडेड फॉर डूइंग दैट। ओके,
So when we come back from the lunch, no, we'll start this little bit about the stats, and then we'll go for outlier detection. Okay. So have we completed PCA, principal component analysis? Yes, no, no. Okay, okay, good. Okay, no, good, good, good. Okay, so let's go for the lunch. So this is okay. So let's meet at 2 p.m. and we'll start through the statistic. Okay. Anyone any doubt till now? If you have, please ask. ओके, थैंक यू टू आप। हाँ, मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, लंच से पहले ही मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम शेयरिंग। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।
हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, 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 ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो बेसिकली, हाँ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा, क्या है, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज first let's see the G test and then we'll see the how can we do the outlier detection, ठीक है। See, actually it's very simple. See this, just I'm trying to see actually what happens. See, this is a normal distribution curve, okay. See, if your mean is equal to 0, mean is equal to 0 means, and sigma is equal to 1, this is called standard normal distribution. Always remember this. Standard normal distribution का मतलब ये होता है mean will be 0 and sigma will be 1. This is called standard normal distribution. So whenever the term standard normal distribution will come, it means mean is equal to 0 and sigma is equal to 1. See, there is a concept here. I will also prove it tomorrow, don't worry. Like I will code it tomorrow, don't worry. But see this, like minus sigma to sigma. This area is minus sigma sigma. This is minus 2 sigma to sigma, and this is minus 3 sigma to plus 3 sigma. Actually, ना story यही है. Minus 3 to sigma to plus 3 sigma is covering 99.7% data. सो इसके बाहर जो डेटा अवेलेबल है ना, ये एरिया और ये एरिया, जैसे बेसिकली 0.0 व्हाट 99% हो गया ना, तो 0.003 एक्चुअली मतलब 0.03% बेसिकली। तो ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, इसको हमें क्या करना है, इसको हम आउटलायर मान करके ड्रॉप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So first of all, we have to rescale our data on standard normal distribution. Then we can say क्या हम इस पे लगाएंगे कि नहीं। मैं इसको ना प्रूव करता हूँ, जस्ट सी, देखो, लेट मी ओपन सम फाइल हियर। जस्ट अ मिनट। सी दिस गाय। सो देखो ध्यान से, इसको नहीं बोलते यार, इसमें ना सही डेटा नहीं होगा।
सीरीज देखो, सभी लोग इस डेटा को देखो ना, इस डेटा पे करते हैं आउटलायर। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसमें से ना आईडी और डेट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी डेट को डिलीट करना। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये डेटा सेट बना, इसको लिख लेते हैं डेटा के अंदर, है ना, ड्रॉप इन्हें कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे डेटा डॉट हेड, ठीक, देखो यहाँ पे ये डेटा हेड है। ये है तुम्हारा लाइक प्राइस, बेडरूम, बाथरूम, स्क्वायर फीट लिविंग, फ्लोर्स, वाटर व्यू, व्यू कंडीशन, ग्रेड, स्क्वायर फीट, सब कुछ है। ये पूरा तुम्हारा डेटा सेट है। ठीक है, अब सी मैं ना इसमें से प्राइस में देखता हूँ कि कोई आउटलायर है कि नहीं। ठीक है, सी केयरफुली। मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले ना मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना, मान लो एक वेरिएबल एम एन, यहाँ लिखता हूँ डेटा, और ये प्राइस, सॉरी, प्राइस का मीन निकालते हैं पहले। इसका इसका ना पहले मीन निकालते हैं। इंपोर्ट numpy एस एन पी, एन पी डॉट मीन, और ये हो गया मीन। मीन को एम एन में सेव किया है, देखो ये मीन है इसका। ऐसे स्टैंडर्ड डिवीजन भी कर लेते हैं। क्या हुआ, एन पी डॉट, देखो ये मीन हो गया। अब जरा यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी कर लेते हैं, एस टी डी, और यहाँ पर एस टी लिख देते हैं इसको, एस टी। देखो ये मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तुम्हें दिख रहा होगा ना, हमने कहा था मीन 0 के बराबर हो और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बराबर हो किसके, 1 के बराबर हो। बट ऐसा तो है नहीं। एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं कैसा हो पाता है क्या। एक मैं लिस्ट बनाता हूँ भाई, इम्पटी लिस्ट, ध्यान से देखते रहना। और फिर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन, इसके अंदर जाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर, और मैं वाई डॉट अपेंड करता हूँ। और अपेंड में कैसे करता हूँ, मैंने क्या कहा था, ध्यान से देखो सभी लोग, देखो इधर। मैंने एक काम करता हूँ, जो ये मेरा आई है डेटा, डेटा में से मेरे मीन को माइनस करता हूँ और इसको एस टी से डिवाइड कर देता हूँ। और ये जो डेटा आया, ये जो डेटा आया, इसको मैं इसके अंदर अपेंड करा देता हूँ, लिस्ट वाई के अंदर। ठीक है, आ गया। अब जरा वाई का मीन चेक करते हैं, एन पी डॉट मीन वाई सी। देखो ये, देखो जीरो है एक्चुअली, ये ध्यान से देखो जीरो है। ई की पावर -17 ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। और जरा स्टैंडर्ड डिवीजन इसका चेक करते हैं, एस टी डी, देखो 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि, कहाँ गया यार, एक सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डेटा जो है उसका मीन 0 नहीं है और ये 1 के बराबर नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो भी ये डेटा है उस डेटा पे ये रूल लगा सकते हैं कि डेटा माइनस का इस डेटे का मीन और डिवाइड बाय इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कर दो। अब ये डेटा जो है वो हर डेटा के साथ करो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सारा डेटा के साथ करो। उसको कहीं स्टोर कर लो, वाई में स्टोर हो गया। अब इसका अगर तुम मीन निकालोगे ना तो 0 आएगा और स्टैंडर्ड 1 आएगा। इसका मतलब हम इस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्केल कर दे रहे हैं स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में। नॉर्मली पहले स्टैंडर्ड नहीं था, बट हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताओ, एनीवन जिसको दिक्कत है इसमें, से यस नो।
चलो सभी लोग आंसर करो तो नो यस। आई गॉट टू आंसर, शिवम एंड मेघना तीन, तीन लोगों ने आंसर किया, 4 5 6 7। कम से कम 10 12 लोग हैं ना जो इस समय अवेलेबल नहीं है ना? अच्छा अवेलेबल लोग हैं, चलो ठीक है, गुड है, ठीक है, मतलब किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब हम क्या करेंगे अब, देखो तो हमने क्या कर दिया, एक बार हम डेटा को कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे किसकी किसकी वैल्यू, जो हमने बात करी थी कि -3 सिग्मा और +3 सिग्मा से बड़ी जो भी हो या छोटी हो आउटलायर है। -3 सिग्मा, सिग्मा माने तो -3 और 3 सिग्मा मतलब 3, 3 से जो बड़ा है और -3 से छोटा है वो आउटलायर है कि नहीं? सी दिस। तो यहाँ मैंने अपेंड करके दिखाया तुम्हें। अब मैं अगर मुझे आउटलायर करना तो मैं सीधे यहीं कर लेता। मैं क्या करता यहाँ पर, मैं इसको जब मैं लिख रहा हूँ इसको, ये चीज है ना, ये जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं इसी को चेक कर लेता कि अगर इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मिलता, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट आई, आई जो है आउटलायर है। देखो कौन कौन से प्राइस जो है आउटलायर है, देखो सब आउटलायर है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही है? देखो क्यों आउटलायर है, देखो ध्यान से, एवरेज प्राइस क्या थी, एवरेज 5 थी 5,40,000, मतलब 5 लाख में एवरेज प्राइस है। और ये देखो ये सब प्राइस कितना है, 46 लाख। तो ये सब 46 लाख, 38 लाख, 18 लाख, ये सब एवरेज से काफी दूर है। और जो लोग भी एवरेज से काफी दूर है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 3,67,000 है, मतलब डेटा 5 लाख 10 लाख से बीच में होगा कहीं पे, लेकिन ये देखो बहुत ज्यादा है, इसलिए आउटलायर है ये। ठीक है, कोई और पकड़ के देखो, मान लो तो तुमने देखा ये वाला प्राइस दिया, कोई और देखो, चेक करो, जैसे मैं तुम्हें चेक करना चाहते हैं, हम बेडरूम चेक करते हैं। तो लेकिन बेडरूम का हमें मीन भी निकालना पड़ेगा, बेडरूम का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, तो बेडरूम्स का मीन निकाल लो यहाँ पे, इसका मीन कुछ अलग आएगा। एवरेज बेडरूम 3.3 है, मतलब 3 BHK का फ्लैट है मैक्सिमम, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, मतलब 2 BHK और 4 BHK के भी कुछ फ्लैट होंगे, तो मोस्टली 2 BHK 4 BHK के बीच में फ्लैट है। लेट्स चेक आउटलायर्स। देखो यहाँ पे 7 BHK 11 BHK, ज़्यादा हो गया ना, इतने बड़े बड़े होंगे ही नहीं फ्लैट्स, 8 BHK का फ्लैट बहुत रेयर मिलता है ना, तो देखो आउटलायर है सब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर, सबको समझ में आ रही बात कि हाउ कैन वी फाइंड द आउटलायर इन द डेटा सेट? सही, यस नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चैलेंज है, मैं चैलेंज तुम्हें दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो इंडियन क्रिकेट टीम जाती है मैच खेलने के लिए, ठीक है, 5 मैच हो चुका है, अगले 3 मैच बाकी है, और उन तीनों मैच का रन का हमें प्रिडिक्शन करना है। मान लो पहला मैच होता है, ठीक है, मान लो कि रोहित शर्मा आता है और 120 रन मारता है, ठीक है, बाकी 10 लोग, कोई उसमें 20 रन मारता है, कोई 35 मारता है, कोई मे बी 25 मारता है, कोई 0 मारता है, कोई 10 रन मारता है, कितना होगा, 3
3 6 5 4 1 0 हो गया क्या? 3 3 6 3 9 10 हो गया ना? 3 6 4 10 पहला मैच का ये स्कोर है। दूसरे मैच में फिर रोहित शर्मा आता है और इस बार 200 रन ठोकता है, ठीक है। अब रन जो है ये ऐसे है 22 में भी 18 में भी 34 में भी 5 में भी 0 में भी 1 6 2 में भी 22 लाइक दिस। तीसरा मैच का स्कोर ऐसे है, फिर रोहित शर्मा आता है और फिर ठीक ठाक रन दे देता है। ये तीसरे मैच में नहीं चलता है, मान लो तीसरे रन में इंडिया हार जाती है और पूरी तरह हारती है, मान लो ऐसे कुछ रन बनते हैं। 3 3 6 7 दिस इज द रन फॉर थर्ड मैच। फोर्थ मैच में फिर ये अपना रोहित शर्मा चलता है और ये मारता है 180 में भी 5 फ्रॉम 4 22 ऐसे कुछ स्कोर बनते हैं लाइक दिस। और ये फिफ्थ मैच का स्कोर है में भी फिर चलता है और फिर 195 8 मारता है 22 32 10 6 4 3 2 1 0 अभी लाइक दिस। अब टोटल डेटा देखोगे, टोटल डेटा, तो टोटल डेटा ये बना 50, नहीं 50 क्यों बना, 55 बना ना, 11 प्लेयर ना, 55 बना डेटा। सो टोटल डेटा बना 55। अब 55 में से 4 बार ये आए हैं कुछ रन। अब ये तो हो गया आउटलायर, तुमने इसको कर दिया बाहर। इसको बाहर करते ही जब तुम प्रेडिक्शन दोगे रन का, तो तुम तो जो मेन प्लेयर है चल रहा है उसको तुमने बाहर कर दिया। हो सकता है अगले मैच में फिर 100 होके, क्योंकि वो लगातार उसमें है, अच्छे फॉर्म में आ रहा है। सो ये तुमने प्रॉब्लम जनरेट कर दी मॉडल के साथ। तो इस अब तो तुम इसको आउटलायर मानोगे नहीं मानोगे, क्योंकि मैथमेटिकली ये आउटलायर है। अगर तुम इसमें लगाओगे ये तरीका तो आउटलायर आ जाएगा, जो हमारे पास तरीका अवेलेबल है उस तरीका के हिसाब से आउटलायर है ये। बट व्हाट विल योर डिसीजन, इज इट आउटलायर? No, it is not outlier. It is not outlier. Why it is not outlier? Because there is a reason behind this. This is a important data. And how do you know if it is important data? Because you all have domain knowledge. क्योंकि आप सभी थोड़ी बहुत क्रिकेट, आप all of you are able to know little bit about cricket. Maybe some of you are very good in cricket. Maybe some of you don't know cricket, but still you know it's a very good score. So we are not going to like हम इसको delete नहीं कर सकते. We are not able to delete this data because it's important data. But how do you know? Because you know the what domain. So that's why domain is very very important for data preparation. यही मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि डेटा प्रिपरेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट आई कैन डू एनीथिंग हियर एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई सेम थिंग इन एनी डेटा। डेटा प्रिपरेशन टोटली डिपेंड्स ऑन डेटा, स्पेशली विच टाइप डोमेन you are working. Maybe you are working on medical data, totally separate story. Maybe you are working on a finance data, sales data, है ना? So that's why domain is really important, but you learn very fast. इसका मतलब यह नहीं है कि या बिल्कुल 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 अरे मैन। सो दिस इज द वे लाइक we can't directly blindly we go and delete the data. It's very important things to make the model, but always remember this in your mind whenever you are doing the outlier detection. Do you know the proper meaning of that particular features or not? Because if you don't know the features meaning, maybe you delete some important data. Okay, anyway, I just give a guidance. Okay, let's go again to see how can we do the detection. So अभी हमने देखा एक तरीका कि कैसे we can do this, just हमने बनाया. Now let's go see the data again. Just go here, see your data again here. Now I am asking
that build of write a function now I'm asking to all of you write a function the suppose I pass this particular data to that function ये फंक्शन एक एक करके जाए और आउटलायर्स को डिलीट करे जब वो फंक्शन डेटा रिटर्न करे तो बिल्कुल उस डेटा के अंदर कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए जब वो रिटर्न करेगा फंक्शन सपोज आई आस्क दिस कि आप लोग ये करो ठीक है देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाएगा मैं करता हूं ध्यान से आप देखते रहो देखो मैं कर रहा हूं ध्यान से देखते रहो सबसे पहले सपोज देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं मान लो मुझे इस प्राइस को डिलीट करना हो देखो मैं कैसे करता हूं ध्यान से देखते रहना मैं लिखता हूं डेटा डेटा प्राइस नॉट इज इक्वल टू दिस वन सी इसको मैं रन करता हूं अब देखो जरा प्राइस नीचे देखना ध्यान से देखो ये वाला प्राइस यहां से डिलीट हो चुका है डेटा के अंदर से देखो इसमें नहीं है तो राइटिंग दिस इन दिस वे वी कैन डिलीट द पर्टिकुलर रो सो जो भी आउटलायर अगर ये आउटलायर है तो डिलीट करेंगे तो पूरा रो डिलीट करेंगे ना देखो पूरा रो डिलीट हो चुका है ठीक है तो लेट मी राइट अ फंक्शन फॉर दिस कैसे देखो मैं करता हूँ ध्यान से देखते रहना आप लोग कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिस फंक्शन में पास करूँगा डेटा को तो मैं लिखा डिफ आउटलायर ये मेरा फंक्शन हो गया इसमें मैं डेटा को पास करूँगा एनीवे सी केयरफुली अब देखो मुझे एक एक करके कॉलम चलाना है मैं क्या करता हूँ देखो ध्यान से देखते रहना मैं ऊपर ना एक एक चीज़ दिखाता भी रहूँगा और उसको करता रहूँगा देखो मुझे कॉलम वाइज एक ना लूप रन करना है सी केयरफुल आ गया देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डॉट सेव और मेरे तो जैसे 19 कॉलम है ना तो मैं मेरे अंदर इसके अंदर मैं कोई भी डेटा पास कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फॉर लूप फॉर आई इन रेंज डेटा डॉट सेव और यहाँ 0 ले लेता हूँ सॉरी 1 ले लेता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को 19 मिल जाएगा तो मैं 19 तक एक लूप चला दूंगा ठीक है अब देखो अगर मैं ऐसे करूँ डेटा डॉट आई लॉक 0 0 नहीं 0 नहीं इट्स नॉट आई लॉक रो तो ये लेगा कॉलम ना 0 देखो पहला कॉलम आ गया 0th कॉलम ये दूसरा कॉलम आ जाएगा ये तीसरा कॉलम आ जाएगा ऐसे मैं करूँगा तो मैं एक ही डेटा को कैच कर सकता हूँ तो मैं यही कर रहा हूँ लिखता हूँ यहाँ पर अंदर आकर के देखो डी फॉर डेटा डेटा इज इक्वल टू दिस और यहाँ मैं लिखता हूँ आई लिखूंगा क्यों लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को ith कॉलम मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट numpy ठीक है एज np अब मैं इस डेटा का मीन कैलकुलेट करता हूँ dm np डॉट मीन d और ms मतलब इस डेटा का नहीं सॉरी ds मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया इस डेटा का सो np डॉट std एंड आई एम जस्ट पासिंग दिस डेटा d देखो मेरे पास ये आ गया मीन आ गया डेविएशन आ गया नाउ व्हाट आई हैव टू डू आई हैव टू फाइंड कि कौन सा डेटा इसके अंदर जो है वो क्या है आउटलायर है तो मैं एक लूप चलाता हूं यहाँ पर ध्यान से देखो फॉर j इन व्हाट j इन d ठीक है इफ अब देखो डेटा माइनस मीन करना था तो मैं लिखता हूं यहां पर j माइनस मीन क्या है dm है और इसको डिवाइड करते हैं किससे ds से है ना अगर ये वाला चीज ये यहां तक हो गया और यहां पर एक और लूप डालो एक कॉलम डालता है ठीक है तो ये हो गया इसके हिसाब से यहां तक ग्रेटर देन अगर 3 होगा तो 3 हो तो ये क्या हो गया ये आउटलायर हो गया है ना ये आउटलायर हो गया ये वाला जे आउटलायर हो गया तो अगर ये वाला जे आउटलायर होगा तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा है ना
अब देखो डिलीट करने का तरीका हमने देखा था अभी ना, देखा था ना ऊपर, ठीक दिखाया था ना मैंने ना। अच्छा चला गया नीचे, चलो मैं दिखाता हूँ फिर से। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, डेटा ठीक है, रो, मान लो 0th कॉलम नॉट इक्वल टू ये वाला डेटा, ठीक है, रन करो इसको, और सॉरी आई लॉक लिखना भूल गया। देखो वो वाला डेटा डिलीट हो गया इसमें से, ये वाला डिलीट हो गया ना, देखो इधर नहीं है ना। तो इसी कंसेप्ट को अपन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिलीट करने के लिए उसको। तो देखो यहाँ पे, और इसको सेव कर देते हैं डेटा में, लेकिन यहाँ से ये टर्म नहीं रखेंगे ना भाई, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे जी रखेंगे ना, क्योंकि वो आउटलायर है ना जिस केस में। तो उसको, ये समझ में आ रहा है सभी को ना कोड, कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा, देखो ध्यान से देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं। देखो मेरे पास ये डेटा, ये कॉलम है, मेरे पास कॉलम है, मे बी ये फंक्शन F1 है, F2 है, F3 है, F4 है और F5 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं हर, इससे पहले कॉलम को पकड़ा, इसने फाइंड किया कौन कौन से आउटलायर है, जहीं पता किया आउटलायर है उसको डिलीट कर दिया, फिर आगे बढ़ा, जहीं पता किया आउटलायर उसको डिलीट कर दिया, फिर आगे बढ़ा, जहीं पता किया आउटलायर उसको डिलीट कर दिया, तो ये वाला क्लीन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम इसको पकड़ेंगे, इसमें से जो होगा ऐसे क्लीन करेंगे, ऐसे इसको पकड़ेंगे, क्योंकि डेटा हमारा बार बार, देखो यहाँ पे डेटा बार बार हमारा क्या हो रहा है, वो जा रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है। तो अगली बार जब जाएगा तो नेक्स्ट कॉलम को लेके आएगा, फिर जाएगा नेक्स्ट कॉलम को लेके आएगा, ऐसे करके हम सारे में से आउटलायर क्या होंगे, निकाल देंगे। क्लियर और नॉट? ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न करा लो डेटा को। देखो मैं इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ, डेटा 1 इज इक्वल टू आउटलायर डेटा, डेटा 1 में इसको सेव किया है, ठीक है, रन हो रहा है कॉलम वाइज, एक एक कॉलम को कर रहा होगा वो। ये कॉलम के लिए नहीं, ये रो वाइज चलेगा, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम, हाँ कॉलम के लिए है बट रो वाइज चलेगा ना ये लूप। हाँ और ये जो होगा वो डेटा के अंदर जाएगा, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जाएगा। हाँ हाँ उस कॉलम के अंदर जा करके, बिल्कुल। हो गया आई थिंक, सी एक बार देखते हैं डेटा 1 डॉट सेव, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है मुझे लग रहा है, 21,597 है ना। ये आउटलायर डिलीट तो हुए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटलायर पूरा डिलीट नहीं हुए हैं। लेट मी चेक अगेन, क्योंकि बड़ा आउटलायर डिलीट होता है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है प्रोग्राम में। लेट मी चेक अगेन,
फॉर आई इंट्रेंस जीरोथ कॉलम में गए, जीरोथ का मीन कैलकुलेट किया, ये किया। कुछ गड़बड़ है क्या कोड में? क्योंकि इससे ज़्यादा आउटलायर डिलीट होना चाहिए, ये तो कम डिलीट हुआ है, इसमें आउटलायर ज़्यादा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम दिस कोड इंपोर्ट numpy डॉट सेव, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ना कुछ गड़बड़ है। आई इंट्रेंस थीटा ठीक है, डॉट आई लॉग भी ठीक है। अपडेट नहीं हो पा रहा, इट्स नॉट अपडेटिंग ऑल द डेटा बिकॉज लेंथ इज स्टिल हाई ना, लाइक only I think one column is deleting. Let's do one thing, print I here no, see it's running for all or not. रन तो हो रहा है सबके लिए, रन तो हो रहा है सबके लिए। रन तो रहा है, हाँ ठीक है ना। आउटलायर तो हट रहा है ना, ये कम तो हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है? 500 के आसपास हो रहा है क्या? सी देखो कितना कम हुआ ये टोटल, इतना माइनस दिस वन 508। ओके सो 508 आउटलायर हो रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो डिलीट हो गया ना, कई बार वो हो रहे होंगे, क्या बोलते हैं, ओवरलैप हो रहे होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने ना ओवरलैप नहीं होने दिया है ना, एक मैंने और बनाया प्रोग्राम, सी दिस वन, किसी क्लास में बनाया होगा। देखो यहाँ पे मैंने ना क्या किया ना, आउटलायर्स को ना अपेंड कर लिया है। देखो एक तो मैंने ये भी लगा दिया है,
मतलब मैंने ना केवल यहाँ पे इस बात पे केयर किया है ना कि जो 3 से बड़े हों, सी, जो 3 से बड़े हों, 3 से छोटा भी तो होगा। हमने जो बताया था, जिसके जो थ्योरी आपको समझाई थी, उसमें तो ऐसा कुछ था ना, सही, थ्योरी के हिसाब से ऐसा था ना, आइदर 3 से बड़ा या 3 से छोटा। तो -3 से छोटा भी जो होगा वो भी आउटलायर है ना, और 3 से जो बड़ा है वो भी आउटलायर है। सही है, स्नो, क्लियर है ना। तो ये मैंने यहाँ पे केयर किया है इस चीज़ का, इस वाले प्रोग्राम में, इस वाले प्रोग्राम में, ठीक है। दैट इज ओनली डिफरेंस, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके सेम। एक्चुअली ना आई वांट टू ओपन अनदर, हाँ प्लीज, क्या चीज़, फिर से बोलो। हम्म हम्म हम्म। हाँ हाँ, लेकिन दिक्कत होगी ना, एंड ऑपरेटर नहीं और ऑपरेटर चाहिए, है ना। एंड में तो दोनों, ऐसा कभी कंडीशन बनेगा नहीं ना कि वो 3 से बड़ा भी हो और छोटा भी हो, है ना। तो और ऑपरेटर के साथ, हाँ हाँ ठीक है, ठीक कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन। नहीं नहीं, एक चीज़ मैं और समझाना चाह रहा हूँ, डॉट टाइल। मैंने ये फंक्शन कॉपी करता हूँ, मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, सभी लोगों को, देखो ध्यान से, जो है वो तो ठीक ही है, बट एक चीज़ और समझाना है मुझे। देखो इधर डेटा डॉट हेड, ठीक है, हमने निकाला किस पे, प्राइस, मान लो बेडरूम्स को ही देखते हैं, डेटा बेडरूम्स, डेटा क्या, बेडरूम्स ना, इसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं मान लो वाई में। देखो हमने तरीका देखा उल्टा निकालने का, दूसरा तरीका देखते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, टाइल वाई,
देखो तो ध्यान से, एक तरीका होता है, उसको देखो बात करते हैं। एक मिनट ना, देखो एक तरीका होता है, ध्यान से देखो। एक तरीका जैसे अभी हमने जो देखा उसको बोलते हैं कि गॉसियन मेथड से हमने निकाला क्या, आउटलायर। दूसरा तरीका होता है वो उसको बोलते हैं बॉक्स मेथड। देखो परसेंटाइल बॉक्स मेथड एक होता है, वो क्या बोलता है ध्यान से देखो। वो ये कहता है कि देखो बॉक्स प्लॉट ही होता है, इसको बोलते हैं 25% और इसको बोलते हैं 75%। ठीक है, इसके ऊपर तुम अपर थ्रेशोल्ड लगा सकते हो और यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड। ठीक है, देखो अपर थ्रेशोल्ड से जो ऊपर होगा आउटलायर है, जो नीचे होगा आउटलायर है। देखो ऊपर क्या होता है एक्चुअली, ये होता क्या है, देखो ये 50% है। देखो ये होता है ना, इसको इसके दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। किसके बीच से गैप को, ये 75% से लेकर 25% के बीच के। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा 75th परसेंटाइल प्लस, देखो प्लस क्योंकि यहां पे ना ऊपर जा रहा है ना, प्लस 1.5 मल्टीप्लाई IQR। ये होता है तुम्हारा अपर थ्रेशोल्ड। और लोअर थ्रेशोल्ड क्या होता है, 25th परसेंटाइल, जो ये वाला पार्ट है, माइनस 1.5 IQR। ये निकाल लो। अब ये अपर थ्रेशोल्ड निकल गया, लोअर थ्रेशोल्ड, इसके नीचे जो डेटा आएगा ये आउटलायर है, इसके ऊपर जो आएगा आउटलायर है। अब तुम ये बोलोगे 1.5 भी क्यों लिया, एक्चुअली ना जो वो वाला ये है ना, ये वाला -3 सिग्मा टू लेके 3 सिग्मा तक, इसी से ये कैलकुलेट किया गया है 1.5 एंड 1.5। ये अलग से कैलकुलेशन नहीं है, ये इसी का कैलकुलेशन है। चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें। एक काम करते हैं, इस y का निकालते हैं एक 75 परसेंटाइल और उसको सेव कर लेते हैं, मान लो ऐसे ही A में। ठीक है, 75 परसेंटाइल होगा और B में करते हैं क्या, 25 परसेंटाइल। B में 25 परसेंटाइल, तो IQR क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, A माइनस का B। सो ये हो गया IQR। इसको कर दो रन। देखो IQR इसके बीच का 1 आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा होगा किसी वजह से, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार एक ही आए मत सोचना। देखो यहाँ पे ऐसे बन ही रहा है कि IQR 1 आ गया। अब देखो अपर थ्रेशोल्ड क्या होगा, मैंने क्या बताया, अपर थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला, अपर थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 75% प्लस 1.5 मल्टीप्लाई व्हाट, IQR। लोअर थ्रेशोल्ड LT इज इक्वल टू क्या होगा, B माइनस 1.5 मल्टीप्लाई व्हाट, IQR। अब देखो ये तुम्हारा हो गया अपर थ्रेशोल्ड कॉमा लोअर थ्रेशोल्ड। क्या है, अरे सॉरी कॉमा ना, देखो यहाँ पे ये आ गया 5.5 1.5। इसके बाहर जो भी डेटा होगा आउटलायर होगा, चेक कर लो। फॉर I इन Y, इफ I ग्रेटर देन 5.5 और I लेस देन 1.5, प्रिंट व्हाट, आउटलायर, आउटलायर कॉमा लिख देते हैं I। देखो ये तुम्हारा आउटलायर आ गया। देखो उसमें भी आ रहा था ना कुछ 6 BHK का फ्लैट, 13 BHK वैसे डेटा आ रहा था ना, तो सारा वो आउटलायर आ गया। जैसे वहाँ पे आउटलायर आ रहा था वैसे यहाँ पे भी आउटलायर आ जाएगा। So this is another method. So there are basically the two methods we can apply for outlier. One is like your normal distribution. So just you can build a normal. Actually, no, both are same. अगर इसका बस ये statistical approach है. So both are same actually. One is like just make your data into standard normal distribution format. है ना। अच्छा बॉक्स प्लॉट में बनाने नॉर्मल चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ रही है ना, I माइनस मीन डिवाइड बाई STD, और फिर वो 3 से कंपेयर करना पड़ रहा है। बॉक्स प्लॉट में क्या है, सीधे पहले निकाल लो अपर थ्रेशोल्ड लोअर थ्रेशोल्ड और उसके बाद तुम देख लो 1.5 के साथ IQR के साथ, ये हो गया लोअर थ्रेशोल्ड और ये हो गया अपर थ्रेशोल्ड,
और इसके बाहर जो है आउटलायर है, इसके बाहर जो है आउटलायर है, काम खत्म, हम आउटलायर निकाल लेंगे बहुत इजीली। आर गेटिंग माय पॉइंट? एनीवन एनी डाउट इन दिस? जस्ट लेट मी नो। एनीवन एनीवेयर एनी डाउट? Yes, no? No, very good. Very good. So see, now we will left with very small topic. Okay, I will try to complete all those tomorrow. So let me, delete all this. Again, I try to, recall those things. See, on Thursday, please remember this. We will start our, training at 9:30 a.m. So basically, I will share the link here at 9:30 a.m. Please join all of you. I will share some test papers, okay, and you have to submit those test paper before 11:59 p.m. It means you have to submit all these things on Thursday itself. Okay, no one can say I have paper, I have exam and all. I will this will not accept it. Okay, last time every time I accepted, but this time this is the final one, so I will not going to expect any your like this type of things. So this is totally pure like you have to do this, no? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? Second thing is Friday. Friday I will share link at 9 a.m. Okay, so you have to join at 9 a.m. Only those join who have doubt. If you have you don't have doubt, you can easily enjoy your Friday, enjoy your weekends. When you are joining, कब है आप लोगों की? इसी मंथ में, नेक्स्ट मंथ है? अच्छा, अभी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं मैं मतलब कहाँ ऑन बोर्ड? अच्छा, ओके ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। So 9 a.m. we will start the session. If you don't have doubt, please don't join. If you have doubt, join that at 9 a.m. Okay, and ask your doubt. I will try to complete answer all of your doubt on Friday itself. Okay, so sometimes lots of doubt. That's why I make it 9 a.m. Sometimes even no even there is no single doubt itself. Okay, that depends on the groups. Sometimes I have lots of doubt. That's why I make it at 9 a.m. कि हम Friday को complete करें. If there is no doubt, I will make close as early as possible. If there is doubt, we will go to जितना तब तक doubt खत्म ना हो पाए. Okay, so we'll do like this. Any doubt? अच्छा, please do revision. Please do practice for this. इसके लिए आप practice revision पूरा कर लें, ठीक है? And again I am saying very seriously, don't share or your see, जब भी हम लोग बीटेक में होता है ना, बीटेक में कंपटीशन इज वेरी लेस, है ना? नाउ आफ्टर 2-3 months you realized competition is very high. Even in the startups, competition is very high because all of you are going to just compete each other जब तक वहाँ पे रहोगे, because there are 2-3 reasons जो आपको आइडिया लग जाएगा बहुत ही जल्दी. व्हेन यू स्टार्ट यू विल गेट फिगर आउट कि क्या क्या रीजन्स है ना. वेरी सून यू विल फाइंड कि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त सबसे अच्छा कंपटीटर बन जाए वहाँ पे. सो दैट यू विल कम टू नो वेरी सून. राइट नाउ यू आर इन कॉलेज, सो इन कॉलेज एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल. सब दोस्त यार हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट विद इन 2-3 months, आफ्टर 4 months यू विल रियलाइज कि थिंग्स विल चेंज. यू विल बिकम कलीग ना. And there are very huge difference between colleague and friends. Always remember, this is golden line. Remember this in your all the career कि बहुत डिफरेंस है एक फ्रेंड में और एक कलीग में. वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, रियलाइज वेरी सून. एंड प्रॉब्लम तब होती है जब आपका फ्रेंड या आपका कलीग बन जाए, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. यू विल समटाइम्स बहुत अच्छा भी होता है, समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अब प्रेशर टाइम पर डिफिकल्ट हो जाता है, पूरे साल तो मजा रहता है, ठीक है. सो एनीवे यू विल कम टू नो वेरी सून. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, please don't copy, don't share
कॉपी तो जो करेगा वो स्मार्ट है, जो शेयर करेगा वो स्मार्ट नहीं है, और वो बहुत जल्दी उसको ये नुकसान एक साल में समझ में आ जाएगा। जो कॉपी करेगा ही इज वेरी स्मार्ट, ओके, तो वो सर्वाइव हो जाएगा अगले एक साल भी कंपनी में, और ही विल गेट अ वेरी गुड अप्रोचल बिकॉज ही इज वेरी गुड इन कॉपी, तो वो कहीं ना कहीं से कॉपी मार के अपने काम का भी कॉपी मार लेगा। बट जो शेयर करेगा इज नॉट गुड, यू नो, सो बहुत डिप्रेशन चला जाएगा एक साल बाद, है ना, कॉलेज में, और ये बहुत फर्क होता है। एनीवे सो मैं आप लोगों की दोस्ती बीच में वो नहीं कर रहा, बट जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा ये अपने को करना, ठीक है। सो एंड थर्सडे प्लीज डोंट शेयर योर कॉपी एंड ऑल, आप सेपरेटली करें, ज़्यादा बेटर है, ओके। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ सेट थर्सडे 9:30 AM, 9:30 पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन होगे सभी लोग, एंड देन आई विल से कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि आई विल, मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं कैसे टेस्ट लूँ कि आप लोग शेयर ना कर पाए। सो मैं कुछ सोच रहा हूँ, फिगर आउट अभी तक नहीं कर पाया हूँ, रात को देखता हूँ कि मैं कुछ फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, देन वी विल डू दिस। सो एंड फ्राइडे वी विल हैव अ डाउट सेशन, इफ यू हैव डाउट ज्वाइन, इफ यू डोंट हैव डाउट एंजॉय योर वीकेंड्स, ओके। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ प्लीज आस्क, प्लीज आस्क, हेलो आई एम देयर, प्लीज आस्क। यार कोई भी जाना नाम लिख के दे दो क्या, कौन कौन सी फाइल्स है, सो आई कैन शेयर। अगर तुम जैसे तुम्हें तभी जरूरत पड़ेगी जब जुपिटर फाइल खोलोगे, तो जुपिटर फाइल खोलना, देखना कौन कौन सी CSV फाइल है, वो लिख के देना, आई विल शेयर, ओके, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गैस, थैंक यू वेरी मच।